Osmosis: the movement of solvent from less concentrated to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called osmosis. इसके बाद है रिवर्स ऑस्मोसिस. Reverse osmosis is technology that used to remove contaminants from water by pushing the water under pressure through a semi-permeable membrane. Introduction of reverse osmosis. Reverse osmosis is one of the oldest and most popular separation techniques used mainly for purification of water. The process was mainly adopted for desalination of seawater. Today, this technology is extensively used by many around the world to purify the water for industrial, residential, commercial, and scientific purposes. History. In 1748, Jean Antoine Nollet was firstly used process of osmosis. In 1776 to 1847, French physician Henry Dotrochet was used. The word osmosis derived from two Greek words endo osmos and exoosmos. Endon inside and exos outside. Osmosis punch. In 1949. In 1949, University of California at Los Angeles first investigated purification of seawater using semi-permeable membrane. In 1950, researchers from both UCLA and University of Florida successfully produced fresh water from seawater. Principle. Here is the principle of reverse osmosis. How does reverse osmosis work? Here is the diagram how reverse osmosis work. Feed water, next pump and ejected steam and permeate वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से. इसके बाद है फिल्ट्रेशन. वाटर प्योरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग undesired chemicals, biological contaminants, suspended solid and gases. There are four filtration processes which is given below. Microfiltration, remove particle of 50 nanometer or longer. Ultrafiltration, remove particle of roughly 3 nanometer or longer. Nanofiltration, remove particle of 1 nanometer or longer. Reverse osmosis is in the final category of membrane filtration, hyperfiltration, and remove particle longer than 0.1 nm. Here is the table, percentage of removal and elements. Okay, basic component to all reverse osmosis system: pre-treatment, high pressure pump, membrane assembly, remineralization and pH adjustment, disinfection, screening of solid. A multimedia filtration is used for screening of solid to help prevent fouling of an RO system. RO system, reverse osmosis system. It contains three layers of
Media consisting of anthracite, coal and sand and journals with a well-operated multimedia filter can remove particulate down to 15 to 20 माइक्रोन। ग्रेवल फिल्टर आ जाता है जी, सैंड और ग्रेवल आ जाना है इसमें। बॉटम ऐश, क्रस्ट ग्लास, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन पार्टिकल, साइज आ जाता है 0.5 to 4 माइक्रोमीटर। उसके बाद आ जाता है जी कार्ट्रिज फिल्ट्रेशन, जनरली स्ट्रिंग वाउंड polypropylene filter are used to remove particle of 1 to 5 micrometer diagram. Dosing: oxidizing biocides such as chlorine are added to kill bacteria, followed by bisulfate dosing to deactivate the chlorine, which can destroy a thin film composite membrane. There are also biofouling inhibitors which do not kill bacteria but simply prevent them from growing slime on membrane of surface plant walls. Anti-scalant or scale inhibitors. Scale inhibitors are used to prevent scale in its RO membrane. कैल्शियम कार्बोनेट स्केल आ जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्बोनेट स्केल, phosphorus scale, sulfate scale, fluoride scale. The pump supplies the pressure needed to push water through the membrane, even as the membrane rejects the passage of salt through it. For brackish water is required pressure is 2 to 5 to 375 psi and 800 to 1180 psi for seawater. Membrane assembly, इसमें आगे vessel में आगे container and reverse osmosis membrane. The R membrane is semi permeable membrane होती है, thin layer होती है, thin skin जो होती है वो 0.25 माइक्रोन थिक होती है, स्ट्रॉन्ग एनफ होती है कि ये इसको प्रेशर को मेंटेन रख सके। इसके बाद आ जाती है स्पाइरल फाउंड मेम्ब्रेन एलिमेंट की डायग्राम आ गई, यहाँ से देख सकते हैं हम। सेलुलोज ट्राइएसिटेट CTA membrane can treat chlorinated water but is susceptible to bacterial contamination and can filter out about 93%, can filter out about 98% contaminants, and less susceptible to bacteria but sensitive to chlorine and require carbon filter pre-treat the chlorine। इसके बाद आ जाता है जी रिमिनलाइजेशन एंड pH एडजस्टमेंट। pH की एडजस्टमेंट होती है यूज जो होती है 6.5 to 8.5 के दरमियान होती है जी। इसके बाद डी इन्फेक्शन आ जाता है, इफेक्टिव बैरियर, पैथोजन के लिए इफेक्टिव बैरियर होता है ये जो। इसमें आ जाता है जी डिसइंफेक्टेंट में आ जाता है यूवी लैंप, क्लोरीनेशन एंड ओजोनेशन। एप्लीकेशन आ जाती है ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर एंड वेस्ट प्योरिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ डिआयोनाइज्ड वाटर में, फूड इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन इंडस्ट्री में। इसके डिसएडवांटेजेस आ गए जी, they recover only 5 to 15% of water entering the system and will add the load on household septic system. Large scale industrial have production efficiency typically at 7 to 75 to 80% and so a high 90 because they generate the high pressure needed for more efficient reverse osmosis filtration. Due to its fine membrane construction, reverse osmosis is not
only remove harmful contaminants but also strips many good health minerals from water as well. एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इन ऑपरेशन आ जाते हैं। इसराइल ने लार्जेस्ट प्लांट लगाया इसराइल में ऑस्मोसिस का, जो है जी 3,20,000 क्यूबिक मीटर वाटर को एक दिन में वो प्योरीफाई करता है। इसी तरह सिंध प्रोविंस में भी लगाया जी प्लांट, और अंडर कंस्ट्रक्शन चाइना में लग रहा है अब, और स्पेन में भी इसी तरह लग रहे हैं। थैंक्स।